हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए टॉपिक लेके आ रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी। बच्चों, वैसे नेम से ही इसका पता चल रहा है कि ये पैक्ड होने की एफिशिएंसी है। सपोज दैट दिस वन क्रिस्टल लैटिस एंड its occupied space HB maximum 100%, but maximum part and available space filled by the consumed particles is called its packing efficiency. It means packing efficiency is the occupied space filled by the consumed particles are called as packing efficiency. ओके, तो अंडरस्टूड। आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है। पैकिंग एफिशिएंसी इज द अवेलेबल स्पेस और ऑक्युपाइड स्पेस filled by the constituent particles are called as packing efficiency. ओके स्टूडेंट्स, आपको ये डेफिनेशन लिख लेनी है। उसके बाद में इस पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। स्टूडेंट्स देखिए, किस फॉर्मूले से हम पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे, वो फॉर्मूला आपको इसके बाद में लिखना है। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू number of atoms into volume of the sphere divided by volume of the unit cell into 100. Students, write down this formula for packing efficiency. Packing efficiency equal to number of atoms denoted by Z. Its value for SCC, BCC and FCC will be 1, 2, 4, already discussed earlier. Then volume of the sphere is be 4 by 3 pi r cube. Here radius of constant particles. Here r equal to radius of constant particle divided by volume of the unit cell. Generally, unit cell is be taken in the form of cube. Therefore, volume of the cubic unit cell is be arm cube as length cube. It means a cube. Okay, students, into 100. Then it is the simple formula of packing efficiency. Student today calculated packing efficiency for simple cubic unit cell. ओके स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, कैलकुलेशन करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी की। किसके लिए? एससीसी के लिए, फॉर एससीसी। स्टूडेंट्स, इट इज ए theoretical calculations. Calculations
of packing efficiency for simple cubic unit cell or simple cubic lattice. Students, simple cubic lattice or SCC, simple cubic unit cell. In this unit cell, constituent particles present only corners. Only corners. And corners particles contact to each other in this form. Suppose one constant particles present in this form and another constant particle present in this form, and radius of constant particle is b small r, and same way another radius of constant particle is b small r, and edge length of constant particle, edge length of cube or unit cell is b small a. Let we consider small r radius constituent particles present at corners, and all particles are attached to each other. Okay, students, according to diagram, A equal to 2R, volumes of the spheres equal to 4 by 3 pi r cube. Number of atoms in SCC is B 1. Okay, students. According to formula, according to formula, packing efficiency equal to Z into 4 by 3 pi r cube divided by a cube into 100. Therefore, students, packing efficiency equal to, put the value of number of atoms 1 into 4 by 3 pi r cube. Students, a equal to 2r, then it's can be written 2r cube into 100. Okay, students, then packing efficiency equals to 4 pi r cube divided by 3 into, open the 2r cube, 8r cube into 100. R cube to R cube cancel, 4 1 ja 4, 4 2 ja 8, 2 1 ja 2, 250 times cancel. Okay, students, packing efficiency equals to pi into 50, up pi value 3.14 into 50 divided by 3.
Now cancel 3.14, 1.04. Then value of 50 multiply into 1.04, 52.4%. It means packing efficiency of SCC is be 52.4%. Then unoccupied space is be unoccupied space present in crystal lattice is be 100 minus 52.4. Then its value will be 47.6%. Okay students, same way packing efficiency can be calculated for BCC and FCC. Students, again attention, you know this one SCC, because constituent particle present only corners and spheres are connected to each other. Therefore, small a equal to 2r. This value is very important according to diagram. And volume of the sphere is the same, 4 by 3 pi r cube for all unit cells. Number of atoms is be different for SCC, BCC and FCC. Okay student, completely note down. First of all, draw diagram. First of all, draw diagram. After it written here, let we consider small r radius constituent particles present at corners, and all particles are attached to each other. After it, write down completely according to diagram. A equal to 2r, volume of the sphere equal to 4 by 3 pi r cube, number of atoms equal to 1. According to formula, packing efficiency equal to Z into 4 by 3 pi r cube divided by A cube into 100. Then value of Z equal to 1 into 4 by 3 pi r cube. A cube equal to A, we know that A equal to 2r, then 2r cube into 100. 4 pi r3 divided by 3 into 8 r cube to r cube cancel, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 टाइम्स 2 50 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 100 से। हाँ, ऊपर पाई बचा है, नीचे इंटू 50 हुआ और नीचे केवल 3 बचा है। पाई की वैल्यू फिक्स होती है 22/7 और 3.14 इंटू 50, इसको 3 से आप कैंसिल कर दीजिए, 1.04 टाइम कैंसिल है और रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 52.4%। ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहीं पर हमारा समाप्त होता है। ये एक छोटा सा टॉपिक हमने लिया है यूनिट सेल के लिए, पर्टिकुलर हम एससीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए बीसीसी और एफसीसी और एचसीपी और सीसीपी इन सब के लिए आपको पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करके बताएंगे। थैंक यू बेटा।